अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 18वें लेक्चर में हो रही है। आज का लेक्चर बेसिकली पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूशन है, जिसमें हमने एक नए मैक्रो इकोनॉमिक इशू जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का था उसको डिस्कस करना शुरू किया था। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अपने पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने बात की कि व्हाट बेसिकली इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमने एक जो पर्टिकुलर मॉडल यूज़ किया, उसमें हमने कहा कि अगर हम डिफाइन करें अपनी टोटल लेबर फोर्स को कैपिटल लेटर एल के साथ, और जो लोग उसमें से एम्प्लॉयड हैं विद कैपिटल लेटर ई, और जो लोग उसमें से अनएम्प्लॉयमेंट है विद कैपिटल लेटर यू, तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो इक्वेशन डेवलप होगी वो कुछ यूं होगी कि हम ये कहेंगे कि आर एल इज इक्वल टू ई प्लस यू, यानी टोटल लेबर फोर्स विल कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट है एम्प्लॉयड वर्कर्स का और दूसरा है अनएम्प्लॉयड वर्कर्स का। और फिर हमने ये कहा कि अगर इस लेबर फोर्स में से कुछ वर्कर्स जो हैं अनएम्प्लॉयड रहते हैं और हम उनकी रेशो लेने चाहते हैं u टू द रेशो l, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो उसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने जो सबसे पहले डिस्कशन की दैट वाज अबाउट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये वो ऐसा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि एक इकोनॉमी में हर वक्त जो है वो प्रिवेल करता है व्हेन इकोनॉमी इज इन द स्टेडी स्टेट। अब इस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमने ये देखना चाहा कि इसके बिहाइंड द सीन जो है वो क्या क्या फैक्टर्स हैं। उसके लिए हमने ये कहा कि अगर हम एक सिंपल मॉडल लें और उस मॉडल में हम ये अज्यूम करें कि हमारा साइज ऑफ द लेबर फोर्स यानी कि कैपिटल लेटर एल जो है दैट इज एक्सोजेनसली डिटरमिन्ड, एंड देन अगर हम डिफाइन करें कि हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम जॉब, यानी इस वक्त अनएम्प्लॉयड है, उसको हम लोअर केस लेटर एस से डिफाइन करें, और दूसरी तरफ हम फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु हैव फाउंड द जॉब, उसको अगर हम एक्सप्रेस करें विद लोअर केस लेटर एफ, तो फिर अगर हम देखना ये चाहें कि हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होगा, तो देन वी सेड कि u ओवर l इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय s प्लस f। लेकिन उसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके बाद हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0, तो उसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास the number of people who have found the job is exactly equal to the number of people who have been separated from the job। जॉब सेपरेशन में भी हमने बात की थी कि दो तरह की वजह हो सकती हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, एक होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड दूसरी होती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में हम बात करते हैं कि जब किसी वर्कर को फायर कर दिया गया हो, दैट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर कोई वर्कर जो है खुद जॉब को छोड़ के जा रहा हो, यानी फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, या मे बी कि वो वर्क फोर्स से आउट होके एजुकेशन या कोई और ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाह रहा हो, तो दैट विल बी दी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन दोनों ही सूरतों में जब हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम की, तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनएम्प्लॉयड, if they are exactly equal to the total number of individual who have found the job, then in that scenario हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास f is equal to 1। अगर f is equal to 1, तो उस सूरत हाल में हमारे पास नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा u over l that will be equal to s divided by s, which is approximately 1। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को जब हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेशन करते हैं इन रियल लाइफ, इफ वी ट्राई टू लुक एट इट,
تو ہمارے پاس اسٹیڈی اسٹیٹ اکولیبریم جو ہے وہ پریویل نہیں کرتا، بلکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹیڈی اسٹیٹ اکولیبریم پریویل نہیں کرتا. واٹ اٹ مینس ہیئر از کہ ہمارا ایف جو کہ فریکشن آف پیپل ہو ہیو فاؤنڈ دی جاب دیٹ از لیس دین 1. پھر ہم نے یہ دیکھنا چاہا کہ وائی آر ایف which is fraction of people who have found the job, why is that less than 1. تو اس میں ہم نے بات کی کہ اس میں جو ہے ایک ہے جاب سرچ اینڈ دوسرا ہے ویج ریجیڈیٹیز. یعنی جاب سرچ میں ہم جب بات کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک جاب کو چھوڑ کے دوسری بہتر جاب کے لیے یعنی والنٹیرلی انمپلائڈ ہو جاتے ہیں، ولنگلی جو ہے وہ ایک ایگزسٹنگ جاب کو چھوڑ کر ایک بہتر جاب کی سرچ میں جو ہے وہ دے لیو دیئر جابس. تو اس پرٹیکولر سینیریو میں ہم کہتے ہیں کہ دی ٹائپ آف انمپلائمنٹ جو ایگزسٹ کرتی ہے دیٹ از فرکشنل انمپلائمنٹ. اور فرکشنل انمپلائمنٹ میں وہ ٹائم پیریڈ جس میں یو آر ولنگ ٹو ورک لیکن آپ نے ایک ایگزسٹنگ جاب کو چھوڑ کے ایک بہتر جاب کے لیے جو ہے وہ تلاش شروع کر دی. اب فرکشنل انمپلائمنٹ جو ہے اس میں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں فار دی انکریز ان دی فرکشنل انمپلائمنٹ یا فار دی پریزنس آف دی فرکشنل انمپلائمنٹ. ایک فیکٹر جو اس میں آتا ہے دیٹ از اباؤٹ دی پریفرنسز آف دی انڈیویجولس اینڈ دیئر ابیلٹیز کہ انڈیویجول کی ابیلٹیز فار اے پرٹیکولر جاب دے ویری. One person cannot handle all kinds of job. Even a specific type of job, if let's suppose کہ is a technician, وہ technician ہر قسم کی مشین کو ہینڈل نہیں کر سکتا. So the abilities are different. Skilled worker and the unskilled worker is another broader category. ان کی preferences بھی فرق ہو سکتی ہیں اور ان preferences میں جو ہے ہمارے پاس working environment, working hours, fringe benefits اینڈ اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے فرکشنل انمپلائمنٹ جو ہے وہ پریویل کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کے لیے اگر لوگوں کو بیٹر جاب کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو کہ جغرافیکلی ڈسٹینس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آفر ملے تو وہ کافی ٹائم لیتے ہیں. تو تھنک اباؤٹ اٹ مطلب اتنی جلدی لیبر موبلٹی جو ہے ود ان اے شارٹر پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ دیٹ ڈز ناٹ ٹیک پلیس. پھر جاب کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ ہر جاب کی اسکل ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اسی وجہ سے جو ہے فرکشنل انمپلائمنٹ جو ہے وہ دیٹ ایگزسٹ. فائنلی ہمارے پاس جو ہے وہ انفارمیشن فلو کی بات ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر امپلائر کو اباؤٹ دی ورکرز فل انفارمیشن اویلیبل نہیں ہوتی، دوسری طرف ورکر کو بھی جاب کے بارے میں فل انفارمیشن نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے دے اسپینڈ سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دی جاب اٹ سیلف اینڈ دین ٹو ڈیسائڈ کہ انہوں نے اس جاب پہ جوائن کرنا ہے یا نہیں. سو دیز آر سم آف دی ریزنس اس کی وجہ سے ہماری جو جاب میں ہے فرکشنل انمپلائمنٹ دیٹ پریویلز ان اے پرٹیکولر سوسائٹی. تو یہ بیسیکلی تھا ہمارا پچھلا لیکچر. آج کے لیکچر میں بیسیکلی جو ہم ٹاپکس ڈسکس کریں گے ان میں ہم بات کرنا چاہیں گے سیکٹورل شفٹ کہ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ سے آف دی اکانومی سے جب فوکس دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے یعنی ایک سیکٹر گروئنگ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈکلائننگ فیز میں آ جاتا ہے تو اس سیکٹورل شفٹ میں بھی ورکرز جو ہیں وہ ایک سیکٹر سے دوسرے میں شفٹ ہوتے ہیں. تو دیٹ برنگس دی فرکشنل انمپلائمنٹ. تو سیکٹورل شفٹ کی بات کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ واٹ آر دی ریزنس فار دی انمپلائمنٹ. اور ان ریزنس میں ہم بات کریں گے 3 فیکٹرز کی جس میں ہم منیمم ویجز کا رول دیکھیں گے، یونینزم کا رول دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ انمپلائمنٹ انشورنس جو ہے اس کا کیا رول ہے. تو مختلف فیکٹرز جو ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں فار دی انمپلائمنٹ ہم ان سب پہ فوکس کریں گے. تو ہم آج کا لیکچر اپنا شروع کرتے ہیں ود آر فرسٹ ٹاپک جو ہے سیکٹورل شفٹ کا. یعنی سیکٹورل شفٹ میں
اگر ہماری اکانومی کے ایک سیکٹر گرو کرتا ہے اور دوسرا سیکٹر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈکلائننگ فیز میں ہوتا ہے تو ہماری کمپوزیشن آف دی لیبر فورس جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے. ورکرز جو ہے وہ ایک ڈکلائننگ سیکٹر سے موو آؤٹ کر کے ایک گروئنگ سیکٹر کی طرف شفٹ کر جاتے ہیں. تو ڈیورنگ دیٹ شفٹنگ پیریڈ جو ہے ہماری ان امپلائمنٹ جو ہے دیٹ از انکریزنگ دی فریکشنل ان امپلائمنٹ. اب سیکٹورل شفٹ میں ایک پرٹیکولر ریزن جو ہے ایز از ریفلیکٹڈ ہیئر وی آر سیئنگ changes in the composition of the demand among industries or region, and there we can talk about the example. The first example is that of the technological change. کہ جیسے with the introduction of the computers now, اب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس the demand for the people who are expert in typewriting will be declining, and then the demand for the people who can work on the computers that will be increasing. تو اس طرح کوئی بھی ٹیکنالوجیکل چینج جب آتی ہے تو ون سیگمنٹ آف دی ورک فورس جو ہے ان کی جابس جو ہیں وہ ڈکلائن ہو جاتی ہیں، جبکہ ایک نئے انٹروڈیوسڈ ٹیکنالوجی والا جو سیکٹر ہے اس میں جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح وی کین آلسو ٹیک اندر ایگزامپل ہیئر، اور اس ایگزامپل میں ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ لاز کی. اس میں سپوز کہ ہماری گورنمنٹ کا فوکس جو ہے از آن دی گروتھ ان ایکسپورٹس. تو اس سینیریو میں کیا ہوگا کہ ایکسپورٹ ریلیٹڈ جو سیکٹرز ہوں گے ان میں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بڑھ جائیں گی، جبکہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ان سیکٹرز میں جو کہ امپورٹ کے سبسٹیچیوٹ ہیں وہ کم ہو جائیں گی. دین وی کین آلسو ٹاک اباؤٹ another scenario جس میں the workers they take some time to change their sectors, and therefore جب workers جو ہیں وہ ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں شفٹ ہوتے ہیں تو ان کی اسکل ڈیولپمنٹ میں بھی جو ہے وہ کچھ انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس ٹائم ایڈجسٹمنٹ میں جو ہے ہماری فرکشنل ان امپلائمنٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. کہ وی سے کہ when workers they move from one sector to another sector and their skill requirements جو ہیں for the new job is different, وہ اس دوران میں جب اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں equip کرتے ہیں تو that give rise to the fractional unemployment. اب ہم دیکھتے ہیں certain data set for the پاکستان کہ اگر ہماری گورنمنٹ کا ہے فوکس یا اکانومی ایز سچ ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں موو کرے گی تو ہماری جو ان امپلائمنٹ ہوگی اس کا لیول بھی چینج ہو جائے. اب اس میں سب سے پہلے وی آر لوکنگ ایٹ دی انڈسٹری شیئرز ان GDP for the period 1969 to 70. The largest sector is that of agriculture. 39% share of agriculture in our GDP and 38% is of the services, whereas manufacturing is 16% and the industries is 7%. Now the changing time, if you look at the industry share in the GDP, and that is as of year 2003, 2004, the share of agriculture in our total GDP has shrunk. اور وہ کم ہو گیا ہے to a level of 23% of the GDP. Services sector جو ہے وہ grow کر گیا ہے and there is a big growth in the services sector which is of the 52%. Manufacturing is approximately the same at 18% and the industry is approximately the same. So the major shift جو ہوئی ہے ہمارے ملک میں over this period of time is from the agriculture to the service sector. اگر ہم دیکھیں کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پہ بھی تو جب ہمارا سروس سیکٹر گرو کیا ہے ایون آج کل اگر ہم دیکھیں تو زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں دے آر ان دی سروس سیکٹر. نئی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز آ رہی ہیں، انٹرنیٹ سروسز پرووائڈر، کیبل آپریٹرز اینڈ دی انڈسٹریز لائک دی پاور سیکٹر. So these are the growing sectors, and then some of the service sector جو ہے اسپیشلی ٹیلی کمیونیکیشن میں ہماری جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب اگر ہم ایک اور اینگل سے اپنے ڈیٹا کو انالائز کرنا چاہیں فور دی پاکستانی اکانومی، سو وی آر لوکنگ ایٹ دی لیبر فورس بریک اپ ان پاکستان ایئر 2004 کہ کتنے لوگ جو ہیں کس سیکٹر میں امپلائڈ ہیں. So 41% of the total labor force is in the agriculture sector, whereas 14% is in manufacturing and mining, 16% is in community and social services,
15% is in wholesale and retail trade. Transportation and construction, they are both 6% each, and then the rest are 2%. So when we are looking at the labor force participation, so our labor force, 41% of the labor force as on the year 2004, end of the year 2004, is still in the agriculture sector. But when we look at the percentage share of the agriculture in GDP, that percentage share is low and rather declining. तब जो ही हमारी एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो ग्रो करता है और दूसरा सेक्टर जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में आ जाता है, तो हमारी लेबर फोर्स जो है वो भी मूव आउट करती है फ्रॉम द डिक्लाइनिंग सेक्टर टू द ग्रोइंग सेक्टर. इन द मीन टाइम जो है जब वो अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, इक्विप कर रहे हैं टू फिट इन टू द न्यू सेक्टर, हमारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट स्टिल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक पॉलिसी इन द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि यानी कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की पॉलिसी फ्रेमवर्क करे या किस तरह की सपोर्ट दे ताकि सोसाइटी में या इकोनॉमी में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाए. तो उसमें देयर आर टू मेन वेज, और एक ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो हैं उनको मेंटेन करे. एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज में जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी दे विल बी लिस्टेड एंड दे विल बी रेडिली अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ द वर्कर्स. और दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स जो हैं उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स जो होंगी दे विल बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, एंड देन दैट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो है वो मैचअप करेगी वर्कर की एबिलिटीज एंड स्किल्स को विद द जॉब रिक्वायरमेंट, एंड देयरफॉर फैसिलिटेट कर देगी कि वो जॉब जो है वर्कर्स को कंफर्टेबली एंड विद अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम जो है वो मिल जाए, एंड देयरफॉर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाए. उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो रीट्रेनिंग के प्रोग्राम्स भी शुरू कर सकती है कि अगर एक सेक्टर जो है वो डिक्लाइनिंग है तो वहां से लेबर फोर्स जो है जो स्पेयर हो जाती है, दे आर अनएम्प्लॉयड एंड दे आर विलिंग टू वर्क फॉर द ग्रोइंग सेक्टर, तो उनको जो है वो रीट्रेन करें टू फिट इन टू द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर. तो दिस कैन बी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब एक और इश्यू, जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें बात होती है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की. बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज में द अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है दैट इज प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स व्हेन दे आर नॉट इन द जॉब. अब अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है डज इट कंट्रीब्यूट टू द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? सो द आंसर इज ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट unemployment insurance may contribute to the frictional unemployment. Before we talk about how it contributes to the frictional unemployment, मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का उसके बारे में बात कर लें. तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको जब आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आपकी जो प्रीवियसली वेज आप ड्रॉ कर रहे थे दैट इज पेड टू द वर्कर. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अब ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है दैट इज अ काइंड ऑफ सोशल कवर टू द वर्कर्स व्हाइल दे आर अनएम्प्लॉयड, बट एट द सेम टाइम इट मे कंट्रीब्यूट टू द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. हाउ कैन वी से दैट? कि जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होती है तो क्या होता है कि आप मेंटली जो है इतना टेंस नहीं होते कि इमीडिएटली जो है वो आप जॉब सर्च करें. आपकी जॉब सर्च की जो एक्टिविटीज हैं दे आर स्लो एज कंपेयर टू कि जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस डज नॉट एग्जिस्ट एज इज द केस इन अंडर डेवलप्ड और द डेवलपिंग कंट्रीज. उसके साथ साथ एक और भी होता है कि जब आपको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है वो मिल रही है तो आप जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के पीरियड को लेंथन कर जाते हैं सो दैट कि एट टाइम यू फील लाइक रिलैक्सिंग, और आप कहते हैं कि इन द मीन टाइम जब मुझे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिल रही है तो आई शुड जस्ट रिलैक्स एंड देन आई शुड गो टू द जॉब मार्केट अगेन. अब सम ऑफ द रीजंस जो है वी हैव लिस्टेड ऑन दिस स्लाइड एज वेल कि इट रिड्यूसेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड,
کیونکہ آپ کو جو ہے وہ کمپنسیشن کہاں سے مل رہی ہے کہ آپ کی جو فارمر پے گیا ہے اس کا کچھ فریکشن جو ہے از بینگ پیڈ ٹو دی ورکر اینڈ یو آر ناٹ ٹوٹلی آؤٹ آف دی جاب ان دا سینس کہ یو آر ارننگ, یو آر گیٹنگ سم تھنگ. Then it also reduces the urgency of finding work. As I already said کہ آپ ریلیکس کر جاتے ہیں, there is no urgencies. Therefore what it does کہ ہمارا وہ جب unemployment کے ریٹ کو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا U over L کو, اور ہم نے کہا تھا کہ U over L is equal to S divided by S plus F. And then we said کہ اگر ہمارا F is equal to 1 تو ہماری unemployment جو ہے natural rate of unemployment will be close to 0. اب جب بات ہم کرتے ہیں کہ unemployment insurance ہے تو unemployment insurance کی وجہ سے ہمارا F جو ہے that will be less than 1. There are certain studies, empirical studies, and they have basically found out کہ the longer a worker is eligible for the unemployment insurance, the longer the duration of the average spell of unemployment. اور یہ جو spell of unemployment ہوتی ہے that basically gives an indication of the frictional unemployment rate. لیکن اس کے ساتھ ساتھ unemployment insurance کے certain benefits بھی ہیں. One of the benefit is کہ instead of pressure on the worker کہ immediately جو بھی جاب ان کو ملتی ہے they should simply start working so that they can support their family and meet the other obligations. اگر آپ کو کچھ breathing space مل جاتی ہے جس میں آپ کو unemployment insurance ملتی ہے تو آپ کیا کریں گے, you will try to find out a job جو آپ کی capabilities and skill کے ساتھ match up کرے گی. And therefore کیا ہوگا کہ آپ کی productivity جو ہے وہ increase کر جائے گی because you are suitable for the kind of job which you have opted, اور اس میں جو آپ نے ٹائم لیا during that time جو ہے آپ کو unemployment insurance نے support provide کی. So productivity of the worker جو ہے وہ بڑھ جائے گی and overall ہماری economy جو ہے اس کی growth میں وہ contribute کرے گا. So this is one benefit of our unemployment insurance. تو آپ کو یاد ہوگا کہ in the beginning of today's lecture we said کہ we would like to see why there is unemployment. اور اس کے لیے ہم نے natural rate of unemployment calculate کرنے کے لیے we used a model with certain assumptions and we came up with the natural rate of unemployment U divided by L is equal to S divided by S plus F. And then we said کہ why there is unemployment, there are reasons for that, اور اس میں one reason is کہ ہمارا جو F ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ F is the people who find their job. تو steady state equilibrium میں اگر ہمارے پاس number of people who have been separated from the job وہ اگر برابر ہو جائے with the number of people who have found the job تو اس صورتحال میں ہمارے پاس جو ہے natural rate of unemployment جو ہے وہ 0 ہو جائے گا. لیکن in real life, in practice جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ F جو ہے number of people who found the job is less than 1. تو اگر ہمارا F جو ہے that is less than 1 تو what are the reasons behind that? Why there is unemployment? اس میں ہم نے بات کی تھی کہ there are two reasons. One reason is the job search, اور اس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ job search کے دوران جو ہماری unemployment ہوتی ہے we call it as the frictional unemployment. اور دوسری reason جو ہے اس کی that is of the real wage rigidity. تو job search والا portion ہم نے cover up کر لیا ہے. Now we are going to move to the second component of the reasons of the unemployment, and that is of the wage rigidity. Unemployment from the real wage rigidity. اب اس گراف میں we have taken the labor force on the x axis and we have taken the real wage on the y axis. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ڈیمانڈ فار لیبر کی بات کر رہے تھے in our previous lectures تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈیمانڈ فار لیبر از بیسیکلی دی مارجنل پروڈکٹ آف لیبر. کہ جب آپ وائی ایکسس پہ ریئل ویج لیتے ہیں اور ایکس ایکسس پہ لیبر اور دی نمبر آف ورکرس لیتے ہیں تو اس صورتحال میں کیا ہے کہ جو آپ کی ریئل ویج کم ہوتی چلی جائے گی تو وٹ ول ہیپن کہ ڈیمانڈ فار دی لیبر ول بی انکریزنگ. وائی؟ کیونکہ پروڈیوسرز کو جو ہے وہ لیبر جو ہے وہ کم ویج دینے پہ مل جاتی ہے. So the marginal product of labor curve is also the demand for labor. دوسری طرف جب ہم نے بات کی
کہ سپلائی آف لیبر, تو ہم نے وہاں پہ بھی کہا تھا کہ فار اے گیون ٹائم پیریڈ ہمارے پاس سپلائی آف لیبر جو ہے دیٹ از ایگزاجنس, دیٹ از فکس. Therefore, supply of labor is a vertical curve. So we have the same scenario here. Okay, we have the supply of labor curve which is vertical and demand for labor curve which is downward sloping. ہمارا demand is equal to supply at a lower wage than the rigid real wage. یعنی ہمارا equilibrium wage rate جو ہے that is below the real wage which is rigid, which we have fixed. So if the real wage is stuck above the equilibrium level, then there aren't enough job to go around. Why? کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو above the equilibrium real wage ہم نے determine کی ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہاں کیا scenario develop ہو رہا ہے. So we take that rigid real wage, then looking at the demand curve, the amount of labor hired is less than the amount of labor who are willing to work. Therefore, the difference between the amount of labor which has been hired by the employer and the number of workers who are willing to work is the unemployment. So this difference here is at a real wage which is above the equilibrium level of the wage. So ہماری جو real wage rigidity ہے that basically is bringing unemployment in the economy. اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہماری یہ جو real wage ہے why it is rigid. So there can be 3 reasons for the real wage rigidities. اس میں ایک ہے ہمارے پاس minimum wage laws کہ بہت سے economies میں, بہت سے countries میں government جو ہے tries to fix the minimum wages for the workers. اس کے بعد جو دوسری reason ہے that is of the labor union. Workers themselves, they form a union which has a kind of monopoly power and just like any other monopolist وہ اپنی پرائس جو ہے وہ ہائر فکس کرنا چاہتے ہیں, ہائر ویجز, اینڈ therefore there is rigidity in the wages. And finally there are certain efficiency theories جو کہ ہمیں ہائر ویجز کے rigid ہونے کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں. تو اب ہم ان ساری ریزنس کو ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیں گے اینڈ وی ول اسٹارٹ ود دی منیمم ویج. سو منیمم ویج میں وی وڈ لائک ٹو سی کہ ہماری منیمم ویجز جو ہیں وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہیں. اگر ہم ورکرز کی 2 کیٹیگریز بنا دیں, اسکلڈ ورکرز اینڈ دی انسکلڈ ورکرز. نارملی جو اسکلڈ ورکرز کی منیمم ویجز ہیں دے آر کیپٹ بلو دیئر ایکچوئل ویجز. تو اف دیٹ از دی سینیریو کہ ایکچوئل ویجز وچ دے آر ڈرائنگ از ہائر دین دی منیمم ویجز فار دی اسکلڈ ورکر, in that particular scenario it does not contribute to the unemployment. لیکن دوسرے سینیریو میں جب ہم unskilled workers کی بات کرتے ہیں یا ٹین ایجرز کی بات کرتے ہیں تو when they enter into the labor market they are not skilled. therefore ان کے لیے جو minimum wages گورنمنٹ نارملی فکس کرتی ہے if it is fixed above the equilibrium wage rates تو اس میں کیا ہوگا, because of that higher wages which has been fixed as the minimum wage by the government, تو equilibrium wage is below that wage, تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس unemployment جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. جو ہمارے employer ہوں گے they will be willing to hire lesser number of workers and that will give rise to the unemployment in the society. اب اگر ہم منیمم ویج کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہیں تو وی ور ان اے پوزیشن ٹو کلیکٹ دا ڈیٹا کمفرٹیبلی فار دی یو ایس اکانومی. تو ان آرڈر ٹو ایکسپلین دی ریزن اینڈ دی رول وچ دی منیمم ویج پلیز فار دی انمپلائمنٹ وی وڈ لائک ٹو ریفر ٹو دس سلائڈ ہیئر. سو دی منیمم ویج ان دا ریئل ورلڈ in September 1996 the minimum wage was raised from $4.25 to $4.75 in USA. Now we are looking at the data which has resulted because of this change here. So unemployment rates before and after. For the teenager, third quarter of 1996, the unemployment rate was 16.6%, which has increased to 17%. Single mothers, unemployment rate was 8.5%, which has increased to 9.1%. All workers 5.3%, and then after the change is also 5.3%. So what this
data reflects? This data reflects, as we have already said, कि हमारी teenagers and the unskilled workers, अगर उनके सेगमेंट में मिनिमम वेजेस को बढ़ा दिया जाए तो व्हाट हैपन्स, एज अ रिजल्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाती है. तो हमारा ये डेटा भी उसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा है कि व्हेन द वेज रेट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम $4.25 टू $4.75, तो क्या हुआ कि हमारे टीनेजर्स की अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया और उसके साथ साथ हमारे सिंगल मदर्स की जो है अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी बढ़ गया. ओवरऑल अगर हम देते हैं तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दैट हैज रिमेन्ड अप्रॉक्सीमेटली द सेम. एंड देयर आर सर्टेन एम्पिरिकल स्टडीज व्हिच हैव इंडिकेटेड सर्टेन रिजल्ट्स, एंड वो रिजल्ट जो है हमने अगेन एट द बॉटम ऑफ दिस स्लाइड रिफ्लेक्ट किए हैं. A 10% increase in the minimum wage increases the teenager unemployment from 1 to 3%. यानी कि there were several studies which were undertaken and they collected the data, gathered the data, and they have analyzed. On the basis of that analysis of the data, they have forecasted. और वो forecasted relationship ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमारी minimum wage जो है वो 10% से बढ़ जाएगी तो टीन एज जो कि अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी फ्रॉम 1 to 3%. ये थी एक रीजन हमारी रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट की और रियल वेज रिजिडिटी की, जिसमें हम कह रहे थे कि रियल वेजेस जो हैं हमारी क्यों रिजिड होती हैं. एक उसमें था हमारे पास पहला जो अभी हमने बात की मिनिमम वेजेस की. ओवरऑल हमारे पास क्या सिनेरियो चल रहा है कि हमने शुरू किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी क्या रीजंस हैं. उसमें हमने दो मेन सेगमेंट्स लिए. एक सेगमेंट था जॉब सर्च जिसमें हमने बात की थी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की. दूसरा सेगमेंट जो था उसका दैट वाज द रियल वेज रिजिडिटीज. रियल वेज रिजिडिटीज के अंदर हमने ये कहा था कि देयर आर 3 रीजंस फॉर द रियल वेज रिजिडिटीज. उसमें से जो सबसे पहली रीजन थी दैट वाज द मिनिमम वेज लॉ, और जो हमने अभी कवर अप की. अब हम उसकी दूसरी रीजन की तरफ जा रहे हैं एंड दैट इज द यूनियन. लेबर यूनियंस. लेबर यूनियंस में क्या होता है कि द वर्कर्स ऑन सेल्फ हेल्प बेसिस and there are laws which permit the laborers to form a union to safeguard their interest, working environment, wages and the other fringe benefits. तो उसमें लेबर यूनियंस जो हैं वो क्या करती हैं कि they try to safeguard the interest of the worker. अब उन्हीं यूनियंस को हम देखना चाहते हैं in the perspective of the effect on the unemployment. Labor union is just like a monopolist. कि अगर हर वर्कर जो है वो लेबर यूनियन का मेंबर बन जाता है तो देयर इज वन फोर्स एंड दैट इज द यूनियन इटसेल्फ. जैसे कि जब हम मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि एक प्रोड्यूसर जो है वो मोनोपोलिस्ट है. मोनोपोलिस्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा है मार्केट को. देयरफॉर क्या होता है कि द मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज अ प्राइस विच सूट्स द मोनोपोलिस्ट इंटरेस्ट. और मोनोपोलिस्ट का इंटरेस्ट क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो इसी तरह जब हम लेबर यूनियन की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली वी आर सेइंग कि लेबर यूनियन के पास काइंड ऑफ मोनोपोली पावर हो जाती है एंड देयरफॉर दे ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट्स. तो जब अब बेनिफिट्स का जो एक फॉर्म है दैट इज द रियल वेजेस. दे वुड लाइक टू सी कि द वेजेस पेड टू द यूनियन मेंबर शुड बी हायर देन द इक्विलिब्रियम वेजेस. If they struggle for that, जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था कि मिनिमम वेज लॉ में जब हमारी रियल वेज रेट is kept at the higher level than the equilibrium rate, that brings unemployment in the society. तो इसी तरह लेबर यूनियन में भी अगर लेबर यूनियन is struggling for a wage rate which is higher than the equilibrium wage rate which should be paid to the workers, तो उस सिनेरियो में भी लेबर यूनियन can contribute to the unemployment. अब इसी लेबर यूनियन के ही सिनेरियो में हमारे पास दो ग्रुप ऑफ वर्कर्स बन जाता है. एक ग्रुप ऑफ वर्कर जो है दे आर नोन एज द इनसाइडर्स. द इनसाइडर्स दे आर द मेंबर्स ऑफ द लेबर यूनियन. नॉन मेंबर्स जो है दे आर द आउटसाइडर्स एंड दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द यूनियन. इनसाइडर्स की कोशिश ये होती है कि उनके बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए इंक्लूडिंग द हायर वेजेस.
जबकि दूसरी तरफ आउटसाइडर जो होते हैं दे आर नॉट वर्किंग, दे आर आउटसाइड द लेबर यूनियन एंड प्रॉबेबली दे डोंट हैव अप्रोप्रिएट जॉब एज वेल. तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि दे आर विलिंग टू वर्क इवन एट अ लोअर वेजेस बिकॉज दे वांट टू गेट अ जॉब. तो एक क्लैश होता है हमारे पास इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स का. इनसाइडर्स जो है दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द हायर वेजेस, आउटसाइडर्स जो है दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब. If the labor union is successful, then the interest of the insiders are safeguarded, a higher wage level is kept for them, and as a result, जो outsiders हैं, some of them will remain out of the job. अब एक third element है which contributes towards the real wage rigidities. Real wage rigidities में हमने ये कहा था कि there are three elements. The first one was the minimum wage law, then the labor union, and finally we are talking about the efficiency theories. अब इन theories को briefly we have reflected on this slide here. These are the theories in which high wages increase workers' productivity. And they say there is a theory that if you pay a higher job, a higher real wage to a worker, whatever the producer is, whichever the producer is, कोई भी प्रोड्यूसर जब एक हायर वेज ऑफर करता है टू अ वर्कर, तो वो प्रोड्यूसर जो है वो क्वालिटी वर्कर्स को जो है वो अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू अनदर प्रोड्यूसर जो कि एक लोअर वेज ऑफर करता है. लोअर वेज के ऊपर टॉप क्वालिटी वर्कर्स आर नॉट अट्रैक्टेड. देयरफॉर उनके पास जो है वो सेकेंड कैटेगरी ऑफ द वर्कर्स जिनकी कैपेबिलिटीज आर लोअर देन द फर्स्ट ग्रुप्स कैपेबिलिटी वो इम्प्लाई करेंगे. इसलिए एज पर द एफिशिएंसी थ्योरीज वो कहते हैं कि अगर आप वर्कर्स को एक हायर वेज देंगे तो दे विल बी वर्किंग एफिशिएंटली एंड दे विल बी इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. तो इसलिए बाय ऑफरिंग द हायर वेजेस यू विल अट्रैक्ट द क्वालिटी वर्कर्स एंड ये क्वालिटी वर्कर्स जो हैं वो उनकी एफिशिएंसी लेवल विल बी मोर एंड देयरफॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ द firm will increase. Then there is another way of looking at the efficiency theories. जैसे if you increase the real wages, then the workers they will increase their effort and they will reduce shirking. कि अगर आप workers को इतनी compensation दे दें कि they are satisfied with that, then they themselves will be contributing more towards the production process. उनकी वरीज कम होंगी, देयरफॉर वरीज कम होने के साथ उनकी कमिटमेंट टू वर्क जो है वो बढ़ जाएगी और उनकी काम चोरीज और शिरकिंग जो है वो कम होगी एंड दे विल बी पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स इनटू द वर्क प्लेस. देन देयर इज अनदर थ्योरी. इट सेज कि इफ यू ऑफर अ हायर रियल वेज रेट टू द वर्कर्स इट विल रिड्यूस द टर्नओवर व्हिच इज कॉस्टली. एज पर दिस थ्योरी व्हाट वी सी हियर इज द प्रोपोनेंट ऑफ द थ्योरी सेज कि इफ you give sufficiently higher real wages to workers, then they will not like to change or switch jobs. They will be satisfied there and there will be less tendency for the workers to switch jobs. और ये job switching जो है that basically is the turnover of the worker. क्योंकि एक worker जो है जब job छोड़ के जाता है then you hire the new worker and then new worker को acclimatize करना पड़ता है in your own production process, जिसकी वजह से ये process जो है वो costly होता है. इसलिए if you want to increase the efficiency and productivity of your production, then आप real wages जो हैं workers को sufficiently large offer करें so that कि उनका turnover कम रहे और cost to the firm जो है वो minimum हो. And finally, there is another efficiency theory and that is related to the developing countries. कि अगर आप वर्कर्स को इतनी रियल वेज ऑफर करें कि उससे उनकी बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो कंफर्टेबली फुलफिल हो जाए इंक्लूडिंग देयर हेल्थ. तो अगर एक वर्कर जो है इतनी वेज अर्न करता है कि उसकी बेसिक नेसेसिटी फूड क्लोथिंग एंड देन अगेन हेल्थ वो भी फुलफिल होती हैं, तो हेल्दी वर्कर जो है दैट ही और शी विल
contribute more to the production process and उसकी efficiency level बढ़ जाएगा and overall productivity of the firm जो है वो भी increase हो जाएगी. And then the increased productivity justifies the cost of paying above equilibrium wages. कि ये सारी की सारी efficiency theories जो हैं based on the arguments we have just discussed, वो ये कहती हैं कि अगर आप वर्कर्स को एक इक्विलिब्रियम लेवल से ज़्यादा हायर रियल वेज दे देंगे तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी. लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो बाय प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, जैसा कि हमने पहले देखा कि पिछले दोनों ही सिनेरियोज में जिसमें हम मिनिमम वेज लॉ की बात कर रहे थे और जिसमें हम बात कर रहे थे यूनियंस की, कि व्हेनेवर द रियल वेजेस आर केप्ट हायर देन द इक्विलिब्रियम वेज रेट तो उस सिनेरियो में अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी. तो इसीलिए एज पर दीज एफिशिएंसी थ्योरीज जब भी हम वर्कर्स को रियल वेज ऑफर करेंगे विच इज हायर देन द इक्विलिब्रियम वेज तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी. अब हम देखना चाहेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, कि जब हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं या नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, दोनों ही सिनेरियो में हम ये देखना चाहेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट जो है whether it is shorter or the longer, and let's look at the data set for this particular issue. The result for the data collected on this issue are summarized on this particular slide. More spells of unemployment are short term than medium term or long term. कि in general जब हम बात करते हैं unemployment की तो unemployment को अगर हम कहें short term, medium term and the long term तो हम ये देखते हैं एज पर द इम्पीरिकल डेटा सेट हम ये देखते हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है मोस्ट ऑफ दैम इज शॉर्ट टर्म. स्पेल्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की छोटी ड्यूरेशन की होती हैं. देन येट मोस्ट ऑफ द टोटल टाइम स्पेंड अनएम्प्लॉयड इज एट्रीब्यूटेबल टू द लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड. कि जो हम टोटल टाइम अनएम्प्लॉयड वर्कर्स के लिए जो स्पेंड करते हैं टोटल वो सारा मिलके जो है लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करता है. तो इसी ड्यूरेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट में वी हैव कलेक्टेड द डेटा एंड द रेस्ट ऑफ द कंक्लूजन्स आर रिपोर्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर. द लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रोबेबली स्ट्रक्चरल एंड आर ड्यू टू द सेक्टोरल शिफ्ट्स अमंग वास्टली डिफरेंट इंडस्ट्रीज. कि जब हमने बात की थी कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट स्पेल्स को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में सेग्रीगेट करें तो मोस्ट ऑफ द ड्यूरेशंस जो हैं दे आर शॉर्ट टर्म इन नेचर. लेकिन जो हमारे लॉन्ग टर्म है दे आर बेसिकली स्ट्रक्चरल चेंजेस. यानी कि जब हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट करते हैं, जैसे इन केस ऑफ पाकिस्तान जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कम होके हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है. सो दीज आर दी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, क्योंकि इसमें जो है people who are leaving the agriculture sector and they are trying to find the jobs in the service sectors, उनकी retraining और उनकी जो है skills development में it takes more time, therefore that becomes long term. And finally, knowing this is important because it can help us craft policies that are more likely to succeed. यानी कि अगर हमें ये पता हो कि हमारी जो है unemployment जो है वो short term in nature या long term in nature, कितनी जो है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है और कितनी जो है हमारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी फ्रेम करेगी सो दैट के उनको अप्रोप्रिएटली टैकल किया जाए. यानी इन केस ऑफ पाकिस्तान कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो श्रिंक कर रहा है, पीपल दे आर कमिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, जबकि हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो देन दे शुड बी ट्रेन सो दैट दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ग्रोइंग सर्विस सेक्टर. तब हम देखते हैं वंस अगेन कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा पब्लिश किया है व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट. तो ये डेटा अगर हम देखें स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1981 टू द ईयर 2003 इज गिविंग अस अ लॉन्ग टर्म इंक्रीजिंग ट्रेंड, व्हिच मींस कि वी नीड टू फ्रेम पॉलिसीज सो दैट वी कैन टैकल दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. अब इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज ही का इशू नहीं है. सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज दे आर आल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अगर आप यूरोप की तरफ देखें कि यूरोपियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रॉम द ईयर 1960 अप टू द ईयर 2000.
So we need to look behind the scene. Okay, in case of Pakistan, we can say that Pakistan is a developing country and we are having increasing unemployment. But what is the explanation for the increasing unemployment rate in Europe? So the answer to this question is that social welfare program in Europe, they are so structured that people, they increase their frictional unemployment period. Number one. Number two is कि उनके जो social security benefit हैं वो इतने enriched हैं कि some of the people they are not willing to work though they are part of the labor force. So the reasons can be different. When we talk about the Pakistan, maybe we come up with the different reasons, or any other developing countries. But when we are looking at the Europe, then increasing unemployment जो है that is due to the social welfare programs of the government. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. तो मैं ये चाहूंगी कि आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले हम थोड़ा सा समराइज कर लें कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं. तो आज के लेक्चर में हमने अनएम्प्लॉयमेंट ही के इशू को कंटिन्यू किया और उसमें हमने बात की पब्लिक पॉलिसी एंड द जॉब सर्च, क्योंकि जॉब सर्च के बारे में हम बात कर रहे थे कि जॉब सर्च जो है वो आपको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देता है. और उससे पहले हम देखना चाह रहे थे कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट. तो हमने ये कहा था कि मेन दो रीजंस है बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट. एक है जॉब सर्च जो कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पैदा करती है, और दूसरा था रियल वेज रिजिडिटीज. और रियल वेज रिजिडिटीज के अंदर हमने ये देखा कि अगर हमारी रियल वेज रेट जो है इज केप्ट अबव द इक्विलिब्रियम वेज रेट, तो इस सूरत हाल में हमारे पास द सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा होगी, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर ज्यादा होगी, कि लेबर जो विलिंग टू वर्क है उनका नंबर ज्यादा होगा, लेकिन द लेबर हु आर एक्चुअली वर्किंग उनकी जो है तादाद कम होगी. एज ए रिजल्ट दैट विल गिव राइज टू द अनएम्प्लॉयमेंट. और उस सूरत में हमने ये कहा था कि रियल वेज रिजिडिटीज के बिहाइंड जो है देयर आर 3 रीजंस. उसमें एक रीजन थी हमारी मिनिमम वेज लॉ की, जिसमें कि हम जो है वर्कर्स के लिए एक मिनिमम वेज फिक्स करते हैं विच इज अबव द इक्विलिब्रियम वेज. तो उस हायर मिनिमम फिक्स वेज की वजह से हमारे पास जो वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क दे आर मोर देन द वर्कर्स हु हैव बीन हायर्ड फ्रॉम बाय द फर्म्स. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रियल वेज इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म. इसलिए जब हम मिनिमम वेज हायर फिक्स कर देते हैं दे कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ वर्कर्स हायर्ड, वेयर एज हायर मिनिमम वेज इज एन अट्रैक्शन फॉर द पीपल एंड दे आर विलिंग टू वर्क. मोर पीपल आर विलिंग टू वर्क, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू, द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड द पीपल हु आर एक्चुअली हायर्ड बाय द फर्म इज आर अनएम्प्लॉयमेंट. और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पैदा हुई है बिकॉज हमारी मिनिमम वेज इज केप्ट हायर देन द इक्विलिब्रियम वेज. उसके बाद दूसरी बात हमने की थी यूनियंस की, कि लेबर यूनियंस जो हैं दे फॉर्म अ काइंड ऑफ मोनोपोली. उनके जो मेंबर्स हैं दे आर नोन एज द इनसाइडर्स, जबकि जो नॉन मेंबर्स हैं दे आर द आउटसाइडर्स. जो इनसाइडर्स हैं उनका इंटरेस्ट ये होता है कि दे शुड हैव द बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, more fringe benefits and the higher real wages. So union workers जो हैं they get together, they join hands and as a result they come up manipulating with a higher wage rate, और उनकी wage rate is kept higher than the equilibrium wage rate. Again it gives rise to the unemployment. कि लेबर यूनियंस दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू द अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज जो नॉन वर्कर्स हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, दे आर विलिंग टू वर्क एट द लोअर वेजेस बट दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी कि दे शुड बी हायर. तीसरी रीजन थी एफिशिएंसी थ्योरीज. देयर आर सर्टेन एफिशिएंसी थ्योरीज जो कि रिलेट करती हैं हायर वेजेस को विद द इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स. उसमें ये कहते हैं कि अगर आप हायर वेजेस ऑफर करेंगे टू द वर्कर्स तो यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट पीपल विद बेटर कैपेबिलिटीज एंड दे विल बी मोर एफिशिएंट एंड दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म. दूसरी तरफ अगर आप हायर रियल वेज वर्कर को ऑफर करेंगे
تو کیا ہوگی, اس کی کمٹمنٹ ٹو ورک بڑھ جائے گی, ورک ایفرٹ زیادہ ہو جائے گی, اور اس کا شرکنگ بیہیویئر جو ہے, کام چوری جو ہے وہ کم ہو جائے گی, اینڈ ایز اے ریزلٹ آپ کی پروڈکٹیوٹی آف دی فرم جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اگر ریئل ویجز ہائر آفر کریں ٹو دی ورکرز تو ان کی ٹرن اوور ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ٹرن اوور یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ورکر جاب چھوڑ کے جاتا ہے اینڈ دین یو ہائر اے نیو ورکر, لیکن اٹ نیڈس کاسٹ ان ٹرمز آف ٹائم اینڈ منی, کہ آپ ایفرٹ پٹ ان کرتے ہیں, یو ٹرین دی نیو ورکر. تو اگر آپ اس ورکر کو ہائر ویجز آفر کریں گے تو ٹرن اوور آف دی ورکر کم ہو جائے گا, جس کی وجہ سے کاسٹ ٹو دی فرم کم ہو جائے گی. کاسٹ ٹو دی فرم جب کم ہوتی ہے تو اوور آل پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ فرم کی بڑھ جاتی ہے. تو یہ ساری ایفیشنسی تھیوریز جو ہیں دے آر آسکنگ فار اے ہائر ریئل ویج ایز این اٹریکشن ٹو ہیو گڈ کوالٹی ورکرز, اور جو آلریڈی ورکرز ہیں ان کی کنٹریبیوشن ٹو دی پروڈکشن پروسیس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اوور آل پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی اینڈ فرم کی جو ہے آؤٹ پٹ وہ گرو کر جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ گورنمنٹ یا پبلک پالیسیز کا کیا رول ہو سکتا ہے جاب سرچ میں. جاب سرچ میں ہم نے بات کی تھی کہ جب لوگ ولنگلی یا انولنگلی جاب چھوڑتے ہیں اینڈ دے آر ان سرچ آف اے نیو جاب, سو دیٹ از بیسیکلی دی فرکشنل انمپلائمنٹ. تو اس سیناریو میں وین وی ہیو دی فرکشنل انمپلائمنٹ ان دا اکانومی, تو رول آف دی گورنمنٹ شوڈ بی کہ امپلائمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ کھولے, جس میں کیا ہوگا کہ انمپلائڈ ورکر جو ہیں دے ول کانٹیکٹ دیم, فرم جو ہوگی فار دی ہائرنگ آف دی ورکرز دے ول آلسو کانٹیکٹ دی امپلائمنٹ ایجنسی, اینڈ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ورکرز کی اسکل جس جاب ریکوائرمنٹ کے ساتھ میچ کریں گی وہ جو ہے ایک بیٹر ورکر ول بی پرووائڈیڈ ٹو دی فرمز, اور ورکر کو بھی ایک ایسی جاب اپرچونٹی جو کہ اس کی اسکلس کے ساتھ میچ کرتی ہو پرووائڈ کی جا سکے گی. دوسری سچویشن یہ ہوگی کہ اگر ہمارے پاس سیکٹورل شفٹ ہے یا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ہے کہ ہماری اکانومی میں سے ایک سیکٹر جو ہے وہ گرو کر رہا ہے جبکہ ایک اور سیکٹر جو ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے. جو ڈکلائننگ سیکٹر ہوگا اس میں ورکرز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ول بی لیڈ آف, تو ان کو جو ہے گورنمنٹ ری ٹریننگ کرے ان سرٹن سینٹر سو دیٹ کہ دے بیکم یوزفل فار دی گروئنگ ایمرجنگ سیکٹر. اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ان امپلائمنٹ انشورنس کی, کہ ان امپلائمنٹ انشورنس جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیسلٹی ہے which is extended to the unemployed worker کہ for a certain period of time after they are being laid off they will be getting the unemployment insurance. تو اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ ورکرز جو ہیں اپنی ایفرٹس کم کر دیتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ دی نیو جاب, کیونکہ دے ہیو سم تھنگ ٹو فال بیک آن, کہ ان کے پاس وہ انمپلائمنٹ انشورنس کا بینیفٹ جو ہے دیٹ ول بی پیڈ ٹو دیم. ایٹ دی سیم ٹائم جب ورکرز پوری ایفرٹ نہیں کرتے تو ہماری انمپلائمنٹ جو ہے فرکشنل انمپلائمنٹ کی ڈیوریشن بھی لمبی ہو سکتی ہے. بٹ دیر از ون بینیفٹ آف انمپلائمنٹ انشورنس کہ یہ ایک بریدنگ اسپیس جو ہے وہ دے دیتا ہے ورکر کو, سو دیٹ کہ دے فائنڈ آؤٹ اے جاب جو ان کے اسکل کے ساتھ میچ کرتی ہے اینڈ دے کین بیٹر کنٹریبیوٹ ٹو دی پروڈکٹیوٹی آف دی فرم. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے ایک میکرو اکنامک ایشو وچ از آف انمپلائمنٹ اس کو ڈسکس کیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک اور اکنامک ایشو جو کہ اکنامک گروتھ کا ہے اس کے بارے میں ڈسکشن شروع کریں گے. اب ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.